أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum, my dear students. Today once again I have come up with a new class for you. Here I have come up with your poetry section of the book, that is poem number 4 in your poetry section, written by Faiz Ahmad Faiz, Speak Up. We are going to start it. Before we actually read the poem, it's a very short poem. We need to make sure that we understood the context of the poem in which he has written this poem, why he has written this poem, what sort of longings did he has in his mind, what was going on at that period of time, the time and space, the given time in which he has written this poem. Without this, we won't be able to understand the exact meaning of why he has written what he tries to say in this poem. So yeah, you have been given a brief introduction of the author himself, and you have been given a highlighted part in your book in all your chapters that helps us to form the idea before we actually read the poem, or any other story. So here, Faiz Ahmad Faiz, his biography, some points of his biography have been given. Some of the works he has written are also mentioned in this brief introduction. Faiz Ahmad Faiz, 1911-1984, was born in Sialkot, that is in Pakistan, Punjab, now in Pakistan. Before before partition, it was in Punjab, now in Pakistan. He is regarded as one of the most influential Urdu poets of the 20th century. 20th century ke jo hote famous, one of the celebrated poets, he is considered by the literary personalities in the world. Faiz Ahmad Faiz added a new strain of longings and intense or exertions या longings या eagerness in his poems, यानी बहुत ही शदीद आरज़ुएं जो कहते हैं उर्दू में कहें तो उसने भरा in poems written during a long imprisonment as a political dissident. So he was in imprisonment, he was jailed as a political dissident. Political dissident means a rebellious person, an outlaw, the person who has departed from the accepted standards and beliefs. उसको कहते हैं political dissident, जो बगावत करे मसलन. So for that purpose he was imprisoned for a long period of time. Modern Urdu poetry is incomplete without him. Some of the people thought that modern like the author here who has written over here has also believed and he has given this statement over here that Urdu poetry is incomplete. Modern Urdu poetry is incomplete without him. Faiz was a journalist. He was a journalist and a broadcaster, someone who broadcast TV, radio shows, etc. And a journalist, यानी वो जो खबर रसां बंदा होता है, journalist आपको क्या कहते हैं उसको, उर्दू में बोलना नहीं आ रहा है, journalist जो होता है. तो he fought all his life for the rights of the poor. इसने हमेशा गरीबों के higher rights के लिए he tried to fight for the right of the people, poor peoples. He was associated with the literary movement अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन हिंद. अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन हिंद, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, those authors who believed in who are longing for, who are desired, who wanted development in their Indian subcontinent. तो ऐसा अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन हिंद जो ऑथर्स लिखते थे डेवलपमेंट के लिए, उनके एक मूवमेंट में, उसने तहरीक में वो शुमार होता था, इसमें उसने शमूलियत की है. His notable poetic works, उसके जो नोटिसेबल हैं, जो क्या कहते हैं वर्थ मेंशनिंग पोएटिक वर्क्स हैं, इंक्लूड दस्ते सबा, यानी सुबह का जो टाइम होता है उस पर कुछ लिखा है उसने, दस्ते सबा के एंड जिंदान नामा लिखा है, जिस तरह से आपने पढ़ा होगा मुख्तार नामा, इस तरह से जिंदान नामा, उसने जिंदान में जो हुआ उसके साथ वो लिखा है. His nikah was performed in one of the library rooms of Government College for Women. Government College Women की किसी रूम में, लाइब्रेरी रूम में उसके निकाह हुआ है. MA रोड श्रीनगर, मौलाना आज़ाद रोड श्रीनगर में अगर कोई गया हो तो उसको पता होगा, JNK. The present poem reveals, now the poem we are going to read, Speak Up, reveals, yani it discloses, it opens his ideas of classless society. Classless society, this idea should be it needs to be looked out critically in the sense that
we need to look what sort of classless society he is talking about, because Islamic perspective is also a classless society, because Islam doesn't believe in classes or race or other things. So we will discuss it later on inshallah. So Faiz was nominated, he was usko namzad kiya gaya hai twice for the Nobel Prize. He won the Lenin Peace Prize in 1962. Lenin Peace Prize is also a prize given for peace, and he was awarded in 1962. ठीक है, तो यहाँ पे उसको ये प्राइज दिया गया, ठीक है. अच्छा, now the introduction, the context of the poem. This poem is taken from Faiz collection. Faiz के collection में से लिया गया, जिसको एंथोलॉजी बोलते हैं, और poems नक्श फरियादी, यानी नक्श फरियादी, जो उसने उर्दू में लिखा हुआ है, पब्लिश इन 1941. इसको 1941 में पब्लिश किया था. Faiz wrote speak up during the final phases of British rule. Now the one of the context is the British rule. तो British rule के last phases में उसने लिखा है the imperial colonialism के last times में. It is evocative of that era. Now evocative क्या होता है? Evoking होता है serve to bring to mind something in your mind. To if I say something that is figurative language, या जो आपको figures use करते हैं, metaphor use करते हैं, जो स्पेशल यूज ऑफ एलोकेंस होता है, ताकि आपके जहन में कोई नक्शा बने, तो इस चीज़ के लिए उसने इवोकेटिव ऑफ दैट एरा, उस एरा को, टू ब्रिंग बैक द आइडिया ऑफ दैट एरा, दैट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज द लास्ट फेजेस ऑफ ब्रिटिश रूल. ही हैज रिटन दिस पोएम. फेज पोएट्री, यू शुड नो अबाउट हाउ इट वाज गोइंग ऑन दैट टाइम, ठीक है. तो यहाँ पे फेज पोएट्री अंडरवेंट ए सेमिनल चेंज. सेमिनल आपको बोला था, सेमिनल इश्यूज, जैसे कि नेल्सन मंडेला के पॉइंट जो हमने उसमें पढ़ा था, यानी ओरिजिनेटिव था, जिसमें क्या था, ओरिजिन हो रहा है, उससे कुछ और चीज़ें पैदा हो रही है जो फ्यूचर में काम आने वाले थे. तो अंडरवेंट ए सेमिनल चेंज अराउंड 1940. सो एग्जाम से क्या इनोवेटिव चेंज उसमें हो गया, ठीक है. कब से हुआ? अराउंड 1940 व्हेन ही गेव अप राइटिंग ट्रेडिशनल पोएम्स. उसने छोड़ दिया जो ट्रेडिशनल जो रस्मी शायरी करते थे उसको छोड़ दिया. देयर इज ए पैराडिम शिफ्ट, यानी इसका क्या हुआ, ए वे ऑफ डूइंग समथिंग, यानी जो पैटर्न शिफ्ट हो गया. पैराडिम यहाँ पे पैटर्न या मॉडल जो है या स्टैंडर्ड शिफ्ट हो गया. फ्रॉम पोएट्री फॉर पोएट्री सेक, पोएट्री के लिए वो पोएट्री करता था, उसको छोड़ दिया टू पोएट्री विद ए पर्पस. अब वो पोएट्री करने लगा है, लेकिन एक पर्पस के साथ. दिस occurred with one of his most intense poems, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग. ये उसके इस एक इंटेंस जो एक शदीद उसका क्या था, पोएम था शिद्दत के साथ, जिसमें उसने इस तरह से बात किया हुआ है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ऐसे उसने कहा हुआ था. आस्क मी नॉट फॉर दैट ओल्ड फर्वर, वो जोश व जज्बा पुराना वो मुझसे न मांगो. फर्वर होता है जोश व जज्बा जो होता है. In which Faiz Ahmad Faiz is at his best as a socialist. Now you should remember also this thing in your mind, that he was a socialist. He believed in socialism, not in Islam, Islamic system of government and other things. तो वो socialist था. तो वो क्या कह रहा है, देखो, बेस्ट एज ए सोशलिस्ट, एट हिज बेस्ट, जहाँ पे वो बेस्ट हो सकता था सोशलिस्ट के तौर पर, यहाँ पे वो इस फॉर्म में था. हु बिलीव्स, जो यकीन करता था, देयर लाइज ए वर्ल्ड बियॉन्ड द रियल्म ऑफ लव, ठीक है, कि वो यकीन करता था कि मोहब्बत के आगे भी एक दुनिया है, ठीक है. हु बिलीव्स देयर लाइज, जहाँ पे पड़ा हुआ है, ए वर्ल्ड बियॉन्ड द रियल्म ऑफ लव, लव से आगे भी, इंसान के आगे और एक दुनिया है. ही इज डीपली टच, उसको बहुत छू जाता है वो बातें. कौन? बाय द साइड ऑफ द पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल, जो गुर्बत ज़दा लोग हैं उनको देखकर. एंड यूजेस हार्ट थ्रोबिंग इमेजेस, और वो क्या करता है, दिल को दहलाने वाले इमेजेस यानी यूज़ करता है, टू ब्रिंग आउट द ऑल्टरनेट रियलिटीज़ ऑफ लाइफ विद पेथोस, जो लाइफ दर्द और सोज, पेथोस सोज, ठीक है, जो इमोशंस के साथ, सोरों के साथ भरे हुए होते हैं, उनको लाने के लिए, अल्टरनेटली उसको दिखाने के लिए वो इमेजेस यूज़ करता है. एस फेज बिलीव इन क्लासलेस सोसाइटी, अब वो क्लासलेस सोसाइटी में बात करता है. हिज पोइट्री इज एन एम्बलम, वो एक निशानी है, एक सिंबल है ऑफ ह्यूमनिज्म, इंसानियत का. Faiz's political beliefs and his association to the socialists really gave him a tough time. अब उसका एसोसिएशन सोशलिस्ट के साथ होने की वजह से, और जो उसका क्या था, बिलीफ था जो गवर्नमेंट के खिलाफ था शायद, सोशलिस्ट एसोसिएशन विद द सोशलिस्ट रियली गिव हिम अ टफ टाइम. उसके जो सियासी बिलीफ थे, उन चीज़ों ने उसको बहुत सख्त टाइम उसकी ज़िंदगी में लाया. बट हिज पोएट्री सरपास्ड ऑल दीज चैलेंजेस, ओवरकम, उन सब से बाहर आ जाता है. एंड इज स्टिल रिकॉर्ड विद ग्रेट फर्वर, अभी भी उसके पोएट्रीज को याद किया जाता है बहुत ही जोश व जज्बे के साथ.
ही लिव्ड इन एग्जाइल, अब वो एक्सपेल्ड हो जाता है, अपने वतन से जिला वतन कर दिया जाता है, वहाँ पे रहता है. ही रिटर्न टू हिज होम मदरलैंड, घर वापस आता है अपनी ज़मीन में, मादरी वतन में. जस्ट ए फ्यू ईयर बिफोर हिज डेथ, कुछ साल पहले ही, अपने मौत के कुछ साल पहले ही. स्पीक अप इज ए ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट टू डिफाई ऑपरेशन. आप देखो, ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन, और जुल्म के बारे में बात कर रहे हैं, इन हाउ टू डिफाई, हाउ टू किस तरह से इनकार करना है. ए पोएम ऑफ प्रोफाउंड मीनिंग, इसमें बहुत ज़्यादा गहरा मीनिंग है. एंड करेज, और हिम्मत की बात है. दैट गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस. वॉइसलेस होता है द क्लास, द वॉइसलेस इज ए क्लास ऑफ पीपल who cannot raise their voice, or if they raise their voice, that doesn't reach to the purpose, the goal they wanted, the people they want to appeal, जहाँ तक वो पहुँचाने चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, या वो आवाज़ नहीं पहुँचा सकते हैं, उनके लिए वो आवाज़ उठाता है. तो now we are going to read the actual poem. Here he starts the poem with, speak up, for your lips are not sealed. Try to speak up whatever you want to speak, because your lips are not sealed. This is what he says in the first line. And your words are still your own, and the words you have in your mind, you have in your thinking, that is still your own. This upright body is yours, the erected, the upright straight body is yours. Speak while your soul is still your own. You should speak till, because इसने क्या कहा, you speak because your body, your soul is still your own. आपकी जो रूह है वो आपका अभी भी है. Look there in that smithy, just look there at that smithy. At that smithy, smithy is the place where the furnace, जिसको भट्ठी कहते हैं, आपको यहाँ पे दिया हुआ है. स्मिथी क्या है? प्लेस वेयर द थिंग्स आर मेड आउट ऑफ मेटल, स्पेशली आयरन और स्टील से क्या करता है, बाय हीटिंग एंड हैमरिंग जो करते हैं, यानी जो लोहार का दुकान होता है. लुक एट दिस स्मिथी. नाउ दिस इज यूज्ड एज ए मेटाफर फॉर द that time, for the time being, that by the then time of the freedom movement of the people who were speaking against, who were marching against the British rule. तो इस चीज़ को उसने as a smithy लिया है. Look there in that smithy, because some of the people were not speaking, even the other part of the society was fighting against the British rule. It's red oven. It's red oven. There is no red oven, although it's red oven. This is used for the blood of the martyrs. Fierce flames. Fierce flames. The shoutings and the fights. They are fighting against the bravely fighting against the British rule. That is called the fierce flames of the people. The padlocks are already opening their mouths. Padlocks होता है U-shaped जो होता है आपके पास. लॉक्स होते हैं, उनको क्या कर रहे हैं, यानी जंजीरों के जो लॉक्स होते हैं वो खोल रहे हैं अपने मुंह. एंड ईच फेटर इज स्कर्टिंग अराउंड, और हर जो फेटर जंजीर होता है, चेन होता है, वो क्या कर रहा है, इज स्कर्टिंग अराउंड, इज सराउंडिंग फॉर फॉर्मिंग द एज. अच्छा, मूविंग अवे कह रहा है, वो कह रहा है यहाँ पे स्कर्टिंग अराउंड, यानी वो मूविंग अराउंड, हर जंजीर जो है इधर उधर हिल रहा है. Speak up now. And now the actual context of the poem is this, that the people are struggling, and those who are not speaking, those who are not coming to fight against those British rules, those people are here invoked. They have been urged by the poet to come and come along with the other people to fight out the crisis they have in their life. तो यहाँ पे आप क्या कह रहा है, फिर से once again he is urging the people to speak up now, for the time is running out, because time is short. Time and tide waits for none. This time will also not remain in our life. Before your body and mind fade away, because we are all mortals. ठीक है, हम सब मर जाने वाले हैं. तो he is asking the people, one day you will definitely die. So before your mind and body fade away, you die. Come and speak something do something good for the people. Tell us, बताएं हमें, for the truth is not yet dead. That truth is still alive and it is not yet dead. Speak, बताओ, whatever you have to say, जो कुछ आपको कहना है. So this is how he has urging the people. The poem was although very short, but he is asking the people to fight against the oppression. Come and say whatever you have to say about those peoples. Hope you have enjoyed it. Thank you for your kind attention. We will meet in the next classes, inshallah. Thank you.